कैसेस पेपर था एंड मोर और लेस वेरी वेरी गुड रेंज ऑफ टॉपिक्स कवर्ड एंड आई थिंक सबसे डिफिकल्ट टॉपिक जो था बिकॉज ट्रिकी डिफिकल्ट टू थिंक थ्रू इवन अंडरस्टैंडिंग टॉपिक वाज डिफिकल्ट फॉर द फर्स्ट वन व्हिच इज ऑक्सीमोरोन्स रिफ्लेक्ट आयरनीज ऑफ लाइफ। एक तो प्रॉब्लम था ये ऑक्सीमोरोन्स का मतलब क्या है एंड आयरनीज का मतलब क्या है। So quickly put, oxymoron basically means where there are two words that mean exactly the opposite. Think of deafening silence or wise folly, living death or bitter joy. ये दो वर्ड्स हैं that mean exactly opposite but they are together. और ironies क्या होते हैं? Same thing. Ironies are paradoxes in life, contradictions in life. बहुत बार literally life कुछ कहना चाह रहा है, होता कुछ और है. Think of a time when you are most hopeless but you have opportunity. Think of a time when you are most happy but I think that culminates in terms of some loss of relationship. When you feel the darkest moment, that is when you have the biggest lead or the biggest crack at some better opportunity. So life is full of ironies. तो आपको ये ऐसे लिखना था and I think this essay demands that आप टॉपिक को रेगुलर वे में ना सोचें। हम सोचते कैसे जनरली टॉपिक उठाओ, व्हाट डज इट मीन, राइट द प्रॉस, राइट द कॉन्स, राइट 4-5 डायमेंशन, टेक्नोलॉजिकल, सोशल एंड सो ऑन एंड यू कंक्लूड ऐसे। इस टॉपिक में ऐसा नहीं चलेगा। इस टॉपिक में यू हैड टू सिट डाउन एंड डिस्कस सम ऑफ द आयरनीज एंड सम ऑफ द ऑक्सीमोरॉन्स। इसको आपको मैप करना ही चैलेंज था। सो व्हाट आई डिड वाज आई टुक अप द टॉपिक एंड आई पुट इट इनटू आवर AI tool Yuki and see what it gave us. So I log into the Yuki first, then I type oxymorons reflect ironies of life. Oxymorons reflect ironies of life. Then I choose frame your essay and I press go. And it starts with first paraphrasing. Paraphrasing का मतलब ये होता है कि टॉपिक उठा के उसको रीराइट करो. The essay explores paraphrasing phrases combining contradictory ideas such as deafening silence, cruel kindness, and symbolize the paradoxes and contradictions inherent in human existence, morality, governance, society. So ये जो सेंटेंस है दिस इज पैराफ्रेजिंग, टॉपिक उठा के उसको रीराइट करना। देन अ फ्यू लाइंस ऑन द एसे एम्स टू एनालाइज हाउ कंट्राडिक्शंस शेप ethical choices, social structures, governance systems and so on. So I think अगर आप इतना लिख पा रहे हो the paraphrasing and essay का intent, you got some bit of an essay right. And I love this introduction. It says life rarely functions in binaries of right and wrong, success or failure, happiness or suffering. Human existence is often characterized by contradictions that coexist simultaneously. So I think if you read this passage and it's there on the Yuki, आप जाके टाइप करो निकाल लो, and you have key arguments. कोई भी ऐसे डेवलप करता है with key arguments. Arguments like a human life is inherently paradoxical. एक dimension explain करो. Ethical decision making involves contradiction. The ethics आता है, वहाँ पर contradictions obvious है. तो आपको oxymoron लिस्ट करके छोड़ना नहीं था. Oxymoron के थ्रू दिखाना चाहिए था कैसे लाइफ में ironies are important. Ironies हैं ethical decisions में. Ironies हैं हमारे लाइफ के choices में. और ये देखिए डेवलपमेंट also has ironies. जहाँ पर टेक्नोलॉजी है वहां पर आइसोलेशन भी है, जहाँ पर ग्लोबलाइजेशन है वहां पर इनइक्वालिटी है। तो ये है ironies of life. And what I liked best was when you scroll down, you get this beautiful schematic that captures the essay. अगर schematic आप बना पा रहे, यूज कर पा रहे हैं, you'll be able to structure and organize the essay better. So life situations, conditions हैं, okay, such as justice versus mercy, freedom versus security, growth versus equality, and then the ethical dimension, policy, and ultimately you need balanced decision. So because we have ironies, एक dimension end कर सकते हैं that we need to embrace the contradictions. We must embrace the paradoxes of life, and that requires balanced thinking. That requires balanced approach. Oxymorons जो paradoxes represent करती हैं, they are part of wisdom of how we must lead our life. I think Yuki is one of the best ways to learn essays writing. आप टॉपिक डालिए Yuki में, you click the template for essays and read what it gives you. And उसी से, for that matter, आप कोई भी AI यूज कर सकते हैं. And I'll show you another very interesting feature of Yuki. आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर एक केस स्टडीज हैं. This case studies largely are the important current affair जिसमें ये contradictions और ये जो opposites irony से दिखते हैं. जैसे digital inclusion versus divide. This is an irony. It's almost like oxymoron. Inclusion भी है, divide भी है. और compassionate leadership during crisis that requires lot of security measures. If the compassionate is about empathy, at the same time you also have to show that a solid stand for security. Lockdown and fighting crisis. Lockdown was about constraining and dealing with the crisis because of that. So ये भी irony of our decision making है, which here is written as a protective hardship. So
what I'm telling you is, see if you can type those topic into your Wiki tool, https://askWiki.com, and see what kind of response you get, and learn essays writing rather than simply knowing what the topic would have been.